रैंडम पॉइंट्स ही हैं। कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है? You found the equation. What is that? You are going to calculate in decimals. Gee, I told you already, your equation should not include decimal. Try to write in the form of a simple integers. Fraction भी अगर आ रही है तो उसको भी कोशिश करें eliminate करने की. So if you make a sketch, those who are waiting, say this is AB, and sketch again, I'm telling you the sketch is not up to the scale, it's a random. This is say AB. What is the perpendicular bisector of AB? उस फॉर्म में लिख लें, ax plus by is equal to c के फॉर्म में लिख लें. So the perpendicular bisector will make an angle 90 degree and it will bisect. So here someone told me that it is minus 5x plus 12y is equal to 14.5. So it means you are not using decimal, so yours should be 24y minus 10x is equal to 29 minus 29. Okay, let's see. I will do here. See, just match here. Okay, listen. आपस में डिस्कशन नहीं करनी, मैं यहाँ पे करूंगा, मैच कर लीजिएगा आप. So see here, I know the points A, B, so I can find the gradient of AB. So the gradient of AB, MAB mean 5 minus 7, 5 plus 7, minus 2 minus 3. So gradient is 12 over minus 5. I can write minus 12 over 5. This is the gradient of AB. What's your gradient of AB? Simply tell me that. Minus 12 over 5, this one. So if the gradient of AB is then this, then the perpendicular ka gradient hoga positive 5 by 12. So that's the gradient of perpendicular bisector. Now to find the, we have gradient. To find the equation we need point. So इस green line के ऊपर जो perpendicular bisector है, क्या हमें कोई point पता है? We don't have, but we can find. We know it is passing through the midpoint. So what are the coordinates of the midpoint? So the coordinates of midpoint are 3 minus 2 is 1 by 2 and minus 1. I am writing them in fraction. Because if you want to find the equation of the line perpendicular bisector, mean green line के ऊपर तो आपको कोई point ही नहीं पता. Okay, now use the equation of straight line y minus y1. So y minus y1 is y plus 1 is equal to m is 5 by 12 x minus x1 x minus 1 by 2. Your method of simplification after this step may vary, different हो सकता है हर किसी का. जी सी उधर देखा आपने मैंने जो किया है. Your y coordinate is minus 1, so y minus y1, so already minus है तो plus 1 बन जाएगा ना. So y plus 1, I'm going to multiply 12 on the other side, so it is 12y plus 12. Before multiplying 5 inside, further मैं क्या कर रहा हूँ, LCM ले रहा हूँ 2x minus 1. ये आगे जो कैलकुलेशन करनी है ये आपकी डिफरेंट हो सकती है, मेरी डिफरेंट हो सकती है. अब इसमें फर्दर
if we multiply, I'm going to multiply 2 here and 5 here, so it will be 24y plus 24 is equal to 10x minus 5. So it is 24y is equal to 10x minus 29. 24y is equal to 10x minus 29, and if you want to shift 10x on the other side, you can do that. So this is an equation free of fraction and free of decimal, in case you are looking for that. Any question? जी मैंने ये स्टार्ट में बताया, रीजन सुनिएगा प्लीज, सुने। अगर आपको सिंपल क्वेश्चन कहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपने किसी भी फॉर्म में आंसर लिख दिया, वो एक्सेप्टेबल होगा। अब ये मैं एक ही दफा बता रहा हूं, ये बार बार क्वेश्चन में यूज होगा, सुन लें अच्छी तरह। आप किसी भी फॉर्म में लिखें आंसर, अगर क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं है तो यू कैन गो फॉर एनी फॉर्म, whether it is y is equal to mx plus c form, ax plus by is equal to c form, ay is equal to bx plus c form, whether it includes decimal, whether it includes fraction, कोई भी फॉर्म हो सकती है। अगर उसने सिर्फ इक्वेशन का तो वो आप बता सकते हैं, बट माय रिकमेंडेशन कि आपकी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना ही फ्रैक्शन हो ना ही डेसिमल हो। रीजन, आपको आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा जो ये मैंने दिया है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना आपके ओ लेवल में भी आता था, यहाँ पे ये नहीं आएगा। आपको कुछ और फर्दर भी इसमें कैलकुलेशन शायद करनी पड़े, हो सकता है इसी इक्वेशन को फर्दर किसी और इक्वेशन के साथ यू हैव टू सॉल्व साइमल्टेनियसली, और जब टू इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, and if already they are in fractions, so their calculation will become difficult for you. And even then, if you are okay with those fractions and you can handle those calculations, go for that, no issue. But अभी हम जितने क्वेश्चंस करेंगे हम इनको इस फॉर्म में ही लिखा करेंगे। जी आंसर में आपने 2 कॉमन लेना, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। इक्विवेलेंट है, वैसे इक्विवेलेंट है, वो भी एक्सेप्ट होगा। ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे आपके पास 2x इज इक्वल टू 4 लिखा हो, बट सिंप्लीफाइड आंसर में आपका कॉमन अगर आ रहा हो और वो कैंसिल हो तो वो कैंसिल करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चंस पास पेपर से। Okay, here is the question. Hey, stop talking. Okay, I have unlocked. Ask her to join. Okay, the point A has coordinates -2, 6. Equation of perpendicular bisector of AB is given 2y is equal to 3x plus 5. Point A is given -2, 6. Equation of perpendicular bisector of AB is given 2y is equal to 3x plus 5. You have to find coordinates of B. Attempt नहीं करना अभी, start किसी ने नहीं करना. Just think about this question. Make a methodology in your mind and don't share with each other. कि पता चल गया तो अब उसको साथ वाले को भी मैं क्यों स्टॉप कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सोचें, लेकिन आप में से अक्सर एक को पता चलता तो फौरन दूसरे को सोचने भी नहीं देते, ये होगा, ये होगा. So don't tell. Think about it. How will you find the coordinates of B?
It's not 2-mark question. Maybe it's of 5 or 6 mark. Yes, Iman. Okay. Okay. I'm going to do what I'm going to do here कि मैं आपके लिए ये जो information given है उसका sketch बनाता हूँ. तो आप में से कुछ को तो शायद समझ आ गया है, लेकिन देखें जरा स्केच बनाने से हमें ज्यादा चीजें क्लियर होंगी. He is saying के equation of perpendicular bisector of AB, and again I'm telling you it's not up to the scale. Say this is A and this is B. So if this is AB, then your perpendicular bisector should be like this. It should be passing through the midpoint and intersecting at an angle 90 degrees. So this is the perpendicular bisector. Your coordinates of A is -2, 6. And the equation of perpendicular bisector is given. So equation of this line is given 2y is equal to 3x plus 5. Now, once you have sketched the given information, now I think it's as compared to the previous, now it's easier to think about the working to get the coordinates of B. Yes, Iman was right. So someone who is online, who wants to tell how to find the coordinates of B, online students, raise your hand if you want to tell the method which we will use here. Yes, Hussein Ahmed. Hassan. Sir, we'll first find the gradient of that line of AB using the line equation of the perpendicular bisector, and then we'll both solve them simultaneously, and we'll find the point. Okay, okay, right. We'll find the center point, and then we'll use to find the point B. Okay, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है जी. द मेथड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. अगर आपको समझ आए तो यू कैन स्टार्ट, लेकिन जरा सुन लें इसमें मेथोडोलॉजी क्या यूज करनी है बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए. फॉर द लाइन ए बी वी ओनली नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. We only know the coordinates of A. So अच्छा, इससे पहले आपको मिड पॉइंट फाइंड करना सबको आता है, लेकिन अगर मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में पहले एक चीज बताना चाह रहा हूं. आपको मिड पॉइंट्स फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं है. मीन अगर आपके पास कोऑर्डिनेट ए गिवन हो, से दिस इज गिवन 3 4 and this is given say 9 2. So how will you find the coordinates of midpoint? That's quite easy. The average of x coordinate, the average of y coordinate. So 3 plus 9 is 12, 12 over 2 is 6. And 4 plus 2, 6, 6 over 2 is 3. So if the coordinates of A and B are given, you can find their midpoint. But my question here is, suppose कि आपको point A is given and the midpoint is also given. Say the midpoint I'm saying here, it is 7 5. I'm telling you that this is midpoint, so these two cut marks are showing that this is a midpoint. If the question is okay, this is A, this is B, C, so here B is the midpoint of C, you have to find the coordinates of C. तो कैसे find करेंगे? कौन सा फॉर्मूला?
तो एक इक्वेशन से 2 अननोन्स कैसे आएंगे, x और y, है ना बात। अप्रोच ठीक है, लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और आप जैसा कर रहे हैं हो जाएगा, वो कम से कम 5 मार्क्स का होना चाहिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आपको भी ये आएगा, ये 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं मैं। हुसैन जी, अब आप बताइए। ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं। ओके सुनिएगा, एक इसका बहुत सिंपल एक्चुअल मेथड जो है, आपका जो एक्चुअल मेथड वो पहले जरा देखिएगा कि आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है ना, x1 एवरेज ऑफ x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। यहाँ पे एक मेथड में बताने लगा कि c के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके x और y हैं, so average of 3 and x will be 7, so mean 3 plus x over 2 is equal to 7। तो यहां से आपके पास x आ जाएगा, 7 times 2 14, 14 minus 3 is 11, and the average of y mean this y1 plus y2 4 plus y over 2, the average of this is 5, this one। तो यहां से आप y भी फाइंड कर सकते हैं और वो 6 आ जाएगा। This is one way of finding the coordinates of x and y। ये उधर से मेरा हला वो कुछ स्विच, उसको जरा करें अच्छी तरह, उसकी वजह से कर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात नहीं कर रहे अभी हम, सिंपल ये क्वेश्चन वो नहीं डिस्कस कर रहा जी। अब इसी को फाइंड करने का मैं एक सेकंड मेथड बताता हूं जो कि एज कंपेयर टू दिस, वो जो बहुत मेंटली आप कर सकते हैं, एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड द कंपैरिजन मेथड। वो कंपैरिजन मेथड क्या है, सी हियर, प्लीज सुनिएगा अच्छी तरह। हियर द एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, हियर द एक्स कोऑर्डिनेट इज 7। जितना एक्स कोऑर्डिनेट ट्रेवल करेगा ए से बी में, उतना ही बी से सी में भी ट्रेवल करेगा। सो बाय कंपेयरिंग कितना ट्रेवल किया, सो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आ रहा है, 3 plus 4 is 7। So if it is midpoint, so 7 plus 4 will give you 11। Now compare the y coordinate। If y coordinate 1 is 4 और उसमें कितने यूनिट्स का जंप आ रहा है, 1 यूनिट का जंप, so 4 plus 1 is 5, तो फर्दर 1 यूनिट का जंप make it 6, so that will be 6। so इसे कहते हैं by comparison। आप साथ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, by comparing you can find the coordinates of c। जी मैंने आपको बताया साथ जो दूसरा मेथड, जब आपके पास कोई वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई आ जाएंगे तो ये कर तो सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अलजेब्रिक स्ट्रांग है, लेकिन इफ यू आर वीक इन अलजेब्रा तो शायद आपसे ये डायरेक्ट ना हो। मीन अगर आपके बाकी वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू हैं तो शायद ये आप ना कर सकें। तो इसीलिए दैट आई हैव टोल्ड यू दैट अदर मेथड मीन द एवरेज वाला। ओके इसी मेथड की मैं फर्दर एक और जरा एग्जांपल देता हूं, फिर वी विल गो बैक टू दैट क्वेश्चन। सी हियर, दिस इज से ए, B and this is C, and further I'm telling B is the midpoint of A and C। The coordinates of A are -2 1, not to the scale, repeating, 3 0। हुजैफा आसिम, मैं वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा जो मैं लिखा था पीछे, उस क्वेश्चन की तरफ मैं जाऊंगा। मैं सिर्फ मिड पॉइंट्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि अगर आपको मिड पॉइंट एंड वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट इज गिवन, देन हाउ विल यू फाइंड द अदर कॉर्नर पॉइंट्स। सो हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C हियर। सो C कंपैरिजन करना है अगर आपने, तो कैसे फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। A, the x coordinate of A is -2, the x coordinate of B is 3। So what is the jump? Jump of -2 से 3 क्या कितना यूनिट का जंप आ रहा है, 5 यूनिट। So -2 plus 5 is 3। So इसका मतलब 3 में further you will add 5, you will get 8। So the x coordinate of 8 by comparison is of C is 8। Now y coordinate, what's the y coordinate? y कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 minus 1 is 0, so 0 में से फर्दर -1 करें तो इट विल बिकम -1। सो ऑन दिस पेज ये जो मैंने 2 एग्जांपल दी हैं रैंडमली,
ये मैंने आपको बेसिकली वो प्रैक्टिस करवाई है कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड पॉइंट व्हेन द मिड पॉइंट एंड वन ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट इज गिवन। और दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया कि वो जो एवरेज वाला है उससे भी आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू दैट क्वेश्चन। So that was the question we were doing. Equation of perpendicular bisector of AB is 2y is equal to 3x plus 5. The coordinates of A are given and you need to find the coordinates of B. जी मैं देखिए थिंकिंग प्रोसेस चलेगा तो मैं ये सोचूंगा कि B फाइंड करने के लिए अगर मुझे ये पता चल जाए ये वाला पॉइंट दिस वन, अगर मुझे ये पॉइंट पता चले, देखिए हर किसी की डिफरेंट थिंकिंग होगी, कोई डिफरेंट वे से सोचेगा, कोई डिफरेंट वे सोचेगा। तो मैं कैसे सोच रहा हूँ जरा आप देखिएगा कि बी में तब फाइंड करूंगा जब ये मिड पॉइंट आ जाएगा। जब मिड पॉइंट मेरे पास होगा तो आई कैन यूज दैट कंपैरिजन मेथड। आई विल हैव ऑलरेडी आई एम हैविंग ए, मिड पॉइंट भी होगा तो कंपेयर करके मैं बी फाइंड कर लूंगा। सो नाउ द क्वेश्चन इन माय माइंड कि हाउ टू फाइंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो फिर मैं सोचूंगा कि ये पॉइंट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टू लाइंस का, ठीक है। तो इसका मतलब आई हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, तो मेरे पास वो पॉइंट आ जाएगा। और फिर मैं सोचूंगा साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व करना है तो दोनों की इक्वेशन होनी चाहिए मेरे पास। आई हैव द इक्वेशन ऑफ दैट ब्लू लाइन बट आई डोंट हैव द इक्वेशन ऑफ दैट ग्रीन लाइन। सो ग्रीन लाइन की इक्वेशन कैसे होगी, पॉइंट गिवन है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी आई शुड हैव वन पॉइंट एंड द ग्रेडियंट। पॉइंट तो है, ग्रेडियंट नहीं है। और ग्रेडियंट के लिए इंफॉर्मेशन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दैट द अदर वन। सो जो दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है उसके ग्रेडियंट से हम इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। और उस लाइन का ग्रेडियंट कैसे आएगा, when equation is given for that line by comparing this with y is equal to mx plus c, you will get the gradient of that line. जी so gradient of that line होगा तो उसका negative reciprocal, you will get the gradient of ab and so on. आप ये करते रहेंगे इसको। जी क्लियर है ये सबको? लेट्स डू इट। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई भी मेथड कर सकते हैं। एट द एंड आंसर सही आना चाहिए। ओके नाउ व्हाट्स द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन 2y is equal to 3x plus 5 का ग्रेडियंट क्या है? If you make y subject, its gradient will be 3 by 5, 3 by 2, sorry, 3 by 2. The gradient of the perpendicular bisector is 3 by 2. So what will be the gradient of AB? Negative reciprocal, negative 2 by 3. This is AB मैंने साथ इसलिए लिखा है just to tell कि this is the gradient of AB, minus 2 by 3. Now we have the point A. We have the point A. So use the point A and the gradient to find the equation of AB. So now I'm going to find equation of AB. Y minus y1, y minus 6 is equal to m minus 2 by 3 x minus x1. Multiply 3 on the other side, it will be 3y minus 18 is equal to minus 2x minus 4. So the equation we got is 3y is equal to minus 2x plus 14. Zaki, any question? Now we need to solve this equation and this equation simultaneously. If you solve these two equations simultaneously, you will get the coordinates of the point of intersection, mean this one. कहाँ मल्टीप्लाई किए? नहीं मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने माइनस 2 इधर किया मल्टीप्लाई, 3 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, कैसे होगा? -2 × 2 -4 होता है ना।
-1 कैसे होगा? अच्छा देखें, इधर x कोऑर्डिनेट क्या है? तो फॉर्मूला क्या है? m इंटू एक्स माइनस x1। x माइनस वो x1 भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ओके गुड, हो गया जी। आप लोगों ने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है इसको? You need to show the working for solving these two simultaneously. What's the answer for solving them after solving them simultaneously? 1 and 4. So after solving these two equations simultaneously, you are telling me the coordinates of midpoint are 1 and 4. अगर आपकी इक्वेशंस ठीक आ रही हैं और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आंसर 1 4 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब साइमल्टेनियस सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपनी कैलकुलेशन रीचेक करें। सो दिस इज 1 4. नाउ बाय कंपेयरिंग, किस चीज का आंसर? मैंने तो मेथड किया ही नहीं है यहाँ पे, इससे छोटा और क्या हो सकता है कि मैंने किया ही नहीं है? 1 4 भी ना लिखूं? एक मिनट, हेलो यार, सुनने दे मुझे उनकी बात। सबसे ज्यादा आप लोग तीन जो है ना बोलते हैं डिस्टर्ब होता है। मुझे पता है आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं मतलब, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल मेरे साथ बैठे हैं और मैं वो बोल रहे हैं, मुझे उनकी कोई आवाज नहीं आ रही। जी आप बताइए क्या मेथड यूज किया आपने? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। ओके 1 4 आ गया जी। किसको ये 1 4 कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के आए हैं ये नहीं समझ आई? यू कैन यूज एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो आपको मेथड आता है आप कर सकते हैं, बट द आंसर विल बी सेम 1 4 जी। ये भी आंसर फाइनल आंसर नहीं है, दिस इज द मिड पॉइंट। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी देन? आपके पास ए के भी हैं, मिड पॉइंट भी आ गया, सो बाय कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। x coordinate of a is -2, x coordinate of the midpoint is 1, so कितना जंप आ रहा है अहमद ज़िया? मैं यही चेक करना चाह रहा हूँ आप मेरे साथ हैं या नहीं। तो नहीं है। सो -2 से 1 तक कितना जंप आ रहा है? 3 यूनिट्स। -2 + 3 is 1, so 1 + 3 is 4. now compare y coordinate 4 6 4, so there is a difference of 2, mean 2 subtract हो रहा है, so 6 4 and 2, so the coordinates of b will be by comparing is 4 2. How many marks? This is a question of 6 marks. That is a question of 6 marks. मैंने इसमें साइमल्टेनियस सॉल्व करने वाला स्टेप नहीं किया, बट आप लोगों ने वो वर्किंग शो करनी है, वो करना है। बताएं कोई प्रॉब्लम है आपको इधर? कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो अब आपने मुझसे पूछना है। लिसन लिसन हमूद, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने मुझसे पूछना है। क्या मैं कह रहा हूं? कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछना है। देखें डिस्टर्बेंस हो रही है ना आपकी वजह से। कर सकते हैं, सॉरी। जो सलमान को या जो फाइज को मेथड अच्छा लग गया है, वो जरूरी है सबको अच्छा लगे। ठीक हो गया? अगर आपको सलमान और फाइज से भी कोई अलग कोई मेथड समझ आता है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ, स्टेप्स मिस नहीं होने चाहिए आपके, आपकी वर्किंग शो होनी चाहिए, क्योंकि आप में से सब पेपर करने के बाद निकलेंगे तो कहेंगे हमारा आउट ऑफ 75 60 मार्क्स 65 कहीं नहीं गए, ए ग्रेड तो आ रहा है हमारा और सी ग्रेड आएगा।
उसकी रीजन मैंने पहले बताइए कि हम मेथड मार्क छोड़ देते हैं। जो मर्जी आप मेथड यूज करें, बट मेथड शो होना चाहिए। इवन ये जो मैंने कंपैरिजन से मैं जो कर रहा हूं, इसको भी साथ लिखें, बाय कंपेयरिंग यू आर गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी लाइक दिस। सो मेथड जरूर शो करें। अगर मेरे मेथड के अलावा कोई भी मेथड आपको समझ आ रहा है तो आप कर सकते हैं। हाँ, आप मुझसे वो, अगर आपको डाउट है कि पता नहीं है मेरा मेथड ठीक है नहीं, मुझसे आप चेक करवा लें कि ये ठीक है या नहीं। सॉरी, no, it's the same thing basically. y minus y1 is equal to m into x minus x1, जो इक्वेशन मैं बता रहा हूं ये एक्चुअली ग्रेडियंट का ही फॉर्मूला है। ये देखें ना, ये वो यूज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1, ये जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं x माइनस x1 को जो नीचे ले जाऊं तो ये वही ग्रेडियंट का ही फॉर्मूला है, जिसको y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, उसी को यूज करके हमने ये इक्वेशन बनाई हुई है। और अगर कोई इसको यूज कर रहा है और कोई इसको यूज कर रहा है, सेम थिंग, कोई मसला नहीं है। ये डिफरेंट नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हमारा एक क्वेश्चन पे काफी टाइम लगा है। ओके, नाउ सी द डायग्राम, वी विल जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट नोट इट डाउन। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, या किसी लाइन की इक्वेशन नहीं फाइंड करनी आती, या मिड पॉइंट नहीं फाइंड करना आता, आपको कैलकुलेशन अब आती हैं। द एक्चुअल प्रॉब्लम इज कि आपको देखना है कि what strategy should be used to find the unknown value. This is A, this is B, this is C. This angle is 90. These two are equal. This point is D. 10 minus 3. This is x-axis, the other one is y-axis. The diagram shows the points A, B, and C lying on the line 2y is equal to x plus 4. So 2y is equal to x plus 4 is the equation of the line ABC. इसको AC कहें, AB कहें, BC कहें, AC कहें, ABC कहें, ये उसी लाइन की ही इक्वेशन है। यार ये तब होता है जब उधर से स्विच कोई लूज हो। पहले आप एक दफा उसको, ये प्रीवियस क्लास में भी ऐसा हो रहा था क्या? अच्छा, okay, the question is it is further given AB is equal to BC, the coordinates of D are also given. Calculate the coordinates of B and C. Sorry, ये क्या है? ये तो नहीं पता। This is a question. आंसर किसी ने नहीं बताना और ना ही वर्किंग स्टार्ट करनी है। और इब्राहिम, अगर तो आप आंसर बताने के लिए if you are raising your hand, तो अभी मैं आंसर आपसे नहीं सुनूंगा। अगर कुछ और क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं पहले चाहता हूँ सब सोचें थोड़ा सा। मुझे उम्मीद है सब सोच रहे हैं, मैं खुद पूछूंगा, मैं किसी एक से। अकेले सोचना है, अपना अपना सोचना है।
ओके अभी आ जाता है, ये ऑफ तो नहीं हो गया? पहले थोड़ी देर के लिए तो आ रहा था, अब उससे भी गए। Okay, here the coordinates of C, B या A किसी के भी यहाँ पे नहीं दिए हुए, और you have the equation of the line ABC, 2y is equal to x plus 4, and you have the coordinates of D 10 minus 3. We have to find the coordinates of B and C. Think about it. No need to raise your hand. मैं खुद पूछूंगा, अगर हाथ खड़ा करे ना करे मैं देखता हूँ मैं किससे पूछना है. You need to just make a strategy in your mind to find how will you find the coordinates of B and C. करना नहीं है, सोचना है सिर्फ, मतलब लिख लिया है. Okay, now raise your hand. I want to see कि किस किस को पता चल गया. I just want to see that. वैसे थोड़ा सा टाइम लगता है. A lot of students, almost 50%, but more than 50%, 60% को पता चल गया. And here Reem, Rahim, Wajiha, Abdul Rahim, Moin, 6 participants. जी काफी लोगों को पता चल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं पता चला उनको नहीं आएगा. वो थोड़ा सा और सोचेंगे, थोड़ा सा अगर उनको टाइम और मिले तो वो कर सकते हैं. तो पहले तो मैं किससे पूछूं? जो अभी तक क्लास में बोला ही नहीं है, वो कौन बोलना चाहता है? Yes, what's your name? Sorry, Muniba. Yes, Muniba. What should be the strategy to find the coordinates of B and C? ओके, जो आंसर भी आएगा वो हम आंसर डिस्कस नहीं करेंगे. टू गेट B, ठीक हो गया. देन फॉर C, ओके टू गेट B उन्होंने जो मेथड बताया वो मैं चाहता हूँ कोई एक ऑनलाइन स्टूडेंट वो भी कोई रिपीट करे. आई वांट Ibrahim. Yes, Ibrahim, what should be the method or strategy to find B? So I'd start with finding the gradient of like the line. You get it by, because you have 2y equals to x plus 4, so you can use that equation. You'll get half as the gradient, 0.5, and then you do you get -2 because you can get the gradient of the perpendicular, and then you use the y minus y1 equals to mx minus x1 to get the grade to find the equation of the line BD. And through that, you compare the both of the lines with simultaneous equation to get the value of B. Okay, right. Okay, now listen, I'm going to tell what they are saying actually. If you want to find the coordinates of B, तो हमें AC line की equation पता है. B is the point of intersection of the line AC and BD. ऐसा ही है. So if B is the point of intersection of line AC and BD, so we will solve those two equations simultaneously to get the coordinates of B.
तो अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, दोनों की इक्वेशन होनी चाहिए. वी हैव द इक्वेशन ऑफ AC, सो वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD फर्स्ट. और वो कैसे फाइंड करेंगे? कोऑर्डिनेट है, ग्रेडियंट नहीं है. और ग्रेडियंट कैसे आएगा? बोथ आर परपेंडिकुलर. और लाइन AC का ग्रेडियंट 2y is equal to x plus 4. What's the gradient? If you compare it is y is equal to mx plus c, so gradient will be 1 by 2. The gradient of the line AC is 1 by 2. ये 1 by 2 कैसे आया? y is equal to mx. y को सब्जेक्ट में 2 डिवाइड हुआ, x का कोएफिशिएंट 1 by 2. So y is equal to mx plus c. Gradient of a line AC is 1 by 2. So negative reciprocal of that will be minus 2. So minus 2 is the gradient of BD. Point है, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी. Now you will solve those two equations simultaneously to get the coordinates of B. Now Daniel will tell us how to find the coordinates of C. C. जल्दी उसको होनी चाहिए जिसको B के कोऑर्डिनेट्स भी समझ आ गए, C के कोऑर्डिनेट्स भी समझ आ गए. अब मैं जल्दी से निकलूं. मिड पॉइंट का फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब 2 पॉइंट्स पता होंगे. तो B तो निकाल लिया, ये तो नहीं पता ना जी. How to find the coordinates of A? Yes, you are right. Because A is on y-axis, and we know on y-axis x coordinate is 0. और लाइन AC की इक्वेशन में आप x 0 पुट करेंगे तो you will get y coordinate of A. So did you get how we got the coordinates of A? Should I repeat? A is on y-axis, तो उसका x coordinate हमें पता है 0 है. तो वो उस लाइन की इक्वेशन में x 0 पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा. जब A और B के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो यूजिंग बाय कंपैरिजन या मिड पॉइंट फार्मूला यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C. आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करके लाना है. दैट इज योर होमवर्क. सॉरी, 1 मार्क. इसका आंसर आप पूछ रहे हैं 6, 5, 12, 8. इसका आंसर आएंगे 6, 5, 12, 8. 6, 5, 12, 8 will be the answer. Thank you so much. Allah Hafiz.